हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भाई आप सुनते हैं रोहित शर्मा जो हैं उन्होंने अब बताया है उनका क्या मतलब प्लान है। एग्जैक्टली और वो उनकी इंटरव्यू उनकी सुन के देखते हैं कि वो हमारे साथ क्या शेयर करेंगे और खासकर। देखेंगे जो हम पिछला एक वीडियो किया था, तो मिस्टर शर्मा का देखना है कि बल्ले से रस निकलता है कि नहीं निकलता। अगर आपको पता नहीं है कि हम क्या बात कर रहे हैं तो सारी वीडियोस पीछे की और आज आगे की आज की सारी देख लेना, इससे पीछे की भी और इसके आगे भी अगर कोई है तो ठीक है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए। जैसे हम अपलोड करें हमारे दूसरे 2 चैनल्स उनको भी सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि आपके कई रिक्वेस्टेड वीडियोस उन चैनल्स में भी आ रहे हैं। उनके लिंक्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आपको वीडियो पसंद है प्लीज़ लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। एड्स के लिए देखा है थम्स अप और कैसे लगा के रखी हुई हैं। Hello everyone Come and on. welcome to this pre-match press conference with India captain Rohit Sharma. As always, just a reminder to everyone to please ensure that your mobile devices are all muted here at the venue and also on the Zoom. Please ensure that your devices remain muted. Because we're very short on time, please, I'd like to ask everyone to ensure that you ask one question at a time. I'll hand over to Milind and he'll let us know who can go first. Rohit, a good time for you to translate what you spoke about when you became captain, that you want to win titles for India? Yeah, absolutely. It's an opportunity for us to come and do that. But we do understand it's been a long process for us and we will stick to our process. I think it's important not to get ahead of ourselves. And we do understand as well that we have to play good cricket to win that game. Which I think we've done in this tournament. We just need to stick to it. I know we're long way away from it, but I think it's important to just understand that it's a contest between bat and ball, which we have to come on top with, and and stick to and trust what you've been doing so far. Rohit, Rohit, yeah, this side. A lot is made out of your record, Virat Kohli's record, KL Rahul's record in knockout matches. Do you actually believe in the fact that this is actually a statement on the quality of a player that they are not doing well in the so-called big matches? Do you is it actually a different game than any other game for you as a player? And do you think of yourself as any lesser as a player if you don't have a great record in a knockout match which comes once in a year or so? I think knockout games are important. We do understand that it's a simple logic to it. Knockouts game because you get to play only once and there's only one opportunity to do well in that knockout game. But for us, I think what not just for me but for the players, what they've done in their entire career doesn't define them by just one knockout game. The entire year you work so hard to get where you want to and to do well in whichever format you play. So that one particular game is not going to decide that. I think it's important. We do understand the importance of knockout, but at the same time, it's also important to realize and understand, what sort of effort you've put in the entire year to come to that stage. For us as players, as a team, I think we can pride ourselves to be here at this point in time because we saw, two of the quality teams which were knocked out. And anything can happen in this format. So for us, I think to be here at this point in time, I think we can take a lot of credit and pride ourselves in where we've come. But again, it's just a phase. It's just one phase of the tournament. We know there are two crucial phases of it. We do understand when you play this kind of tournament, you have to break it into parts and we've done one part of it really well. There are two more parts to go, but tomorrow is going to be a one part of it where we have to play well to get the result. But yeah, I mean, specifically to talk about that, I think it's important to understand that knockout games are important, and you do well
It gives you that immense confidence. नॉकआउट पे क्यों जा रहे हैं पता नहीं, मेन पे आओ. We do not forget, what has happened in the past, what the players have done in the past, all the performances that they've put in for the team over the year. That one game cannot be dictating that. I think there's a lot of effort that goes into putting ourselves and playing for the country and getting those efforts, getting those runs, getting those wickets. So I really don't believe that one bad game in the knockout can truly define what kind of player you are. Rohit. Hi. How much fun have you had just being a captain in this World Cup? It's so many different conditions everywhere. And where does Adelaide fit into it? You played a game the other day, just different dimensions. Are there different hitting areas? Are there different lengths you would want your bowlers to bowl, and how different are they? Yeah, that's one of the challenges that we've had in this tournament. Usually, when you play, for example, last year in Dubai, the dimension of the ground didn't change too much. We know there was one side bigger, but other than that, not too many things changed. But when we played here in Australia, obviously, some of the grounds have longer, straighter boundaries. Some of the grounds have smaller on the sides. So you got to adjust to it as quickly as possible. And guys who have not been here before, for them it's a huge challenge, to adjust to that length and the shot making as well. So I think we adapted to that pretty nicely. We were put under pressure in some of the games, but I thought we responded to that pressure. We responded to that pressure really well. And Adelaide is one ground where, again, you have to go back and understand what sort of tactics you want to use here. Because the last game we played in Melbourne, completely different. Now Adelaide, the side boundaries are a little shorter. So, of course, we've had a lot of talks about it in our group about what we want to do before we actually played that game against Bangladesh. Because since then we've been playing on the grounds which had longer straight boundaries. So, side boundaries. So you could bowl your slower balls into the pitch, the bouncers, and the batsmen, needed to adjust to that as well. But when we came to Adelaide, it was a completely different scenario. And we do understand that having played a game here, we do understand what we need to come up with when it comes to, planning and tactics. तो फ्रेंड्स इंटरेस्टिंग है देखना कि उससे पता चलता है कि सीरियसनेस ऑफ गेम जो है एज अ कैप्टन व्हेन ही इज कमिंग अप एंड टॉकिंग, तो उससे पता चलता है कि हाउ सीरियस योर कैप्टन इज इन रिगार्ड्स विद दिस गेम. और जिस तरह से इन्होंने खास बताया कि हमारे कई ऐसे प्लेयर्स हैं जो उस टाइप के मतलब उस फील्ड में कभी खेला ही नहीं उन्होंने है, और क्योंकि उनके डायमेंशंस डिफरेंट होते हैं और कभी आपने खेला नहीं है तो उसमें सेट होने में भी कई बार टाइम लगता है. पर एक एंगल ये भी है, अगर आप ये बोल रहे हो तो ऑस्ट्रेलियन टीम जो वहाँ पे रोज़ खेलती है, वहीं पे पली बड़े लोग हैं, वो हार गई. तो हाउ इफेक्टिव मतलब ये रीजनिंग हो उस पर भी आपको सोचना चाहिए फिर, क्योंकि जो वहाँ की टीम है अगर वही हार रही है तो इट कुड बी वन ऑफ द रीजंस बट इट कैन नॉट बी वन बिग राइट. ये अच्छी बात है. अब मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ टोटली डिफरेंट है. कि अब जब वो मिस्टर शर्मा बैठे हुए थे, उनके सामने कौन सी 3 बोतलें पड़ी थी, कौन से ब्रांड की बोतलें थी? ये पड़ी तो है, हमें दिख रहा है, मगर देखने के बाद क्वेश्चन आएगा ये क्यों भाई कि क्या लोगों को याद भी रहता है कि कौन सी बोतलें वहाँ पड़ी हुई थी? मेरे को तो एक का ही नाम पता है, दूसरी 2 तो मैंने कभी देखी ध्यान ही नहीं दिया. हमारे केस में तो हमें सामने दिख रही हैं बोतलें. आप लोगों का नहीं दिख रही. चलो देखो आपके केस में टेस्ट है, आईक्यू टेस्ट, आपके केस में ऑब्जर्वेशन टेस्ट, और जो वीडियो था तो चला गया. तो अब आप बताइए, आपको याद है कौन सी बोतलें पड़ी थी? 3 थी, बता रही हूँ. तीनों के नाम लिखो बिना देखे. अगर आपको वाकई बोतलें सब याद हैं, फैंटास्टिक, जाइए सोल्जर बनिए या रॉ को ज्वाइन करिए, जबरदस्त करिए. आपकी ऑब्जर्वेशन पावर बड़ी ब्यूटीफुल है. बिल्कुल. मगर काफी अच्छा बता रहे हैं कि एक नॉकआउट गेम की वजह से आप ये नहीं बोल सकते कि नॉकआउट में गंदा खेला तो सब जिंदगी भर के लिए गंदा हो गया. दैट इज ऑब्वियस. वो भाई साहब ने क्वेश्चन ही ऐसा पूछा, टाइम ले लिया नेसेसरीली. नॉकआउट का बोलो जय हो, नॉकआउट के बाद में पूछो, मेन चीजों का पूछो भैया. बिल्कुल. जिसमें वो खुद बता रहे हैं कि मैं इस बार अच्छा नहीं खेल रहा मगर अब खेलूंगा. वो हमें देखना था कि मेन तो उस पर फोकस था. मगर बहुत अच्छा है. और उन्होंने ये भी कहा कि देखिए
कुछ लोग पहली बार खेल रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में, उन्होंने डायमेंशंस कहा था जितना बड़ा ग्राउंड है, या तो ऐसा होगा कि कभी ज़िंदगी में आप क्रिकेट को रिफॉर्म करिए कि सभी में एग्जैक्टली सेम डायमेंशन होगा, होना तो यही चाहिए करेक्टली स्पीकिंग। सर्कुलर बता देंगे कि आपको सर्कल ऐसा सर्कल होना चाहिए, एंड ऑफ स्टोरी। हर जो बंदा बना रहा है एग्जैक्टली ऐसा ही सर्कल चाहिए, बिल्कुल। और जहाँ बारिश बुरिश हो रही है और उस वो कंडीशंस है वहां पे गेम्स होनी ही नहीं चाहिए भाई। कोई ओवल शोवल कुछ नहीं कर रहे, हर जगह एग्जैक्ट ये इस टाइप का सर्कल चाहिए, होना तो चाहिए ताकि मतलब उससे गेम में थोड़ी वो आती है यूनिफॉर्मिटी कि भी आपको एग्जैक्टली उतना ही सर्कल मिलना है खेलने के लिए। आप कहीं पर भी जाएं और रेन का चक्कर नहीं होना चाहिए, ऊपर आप इंडोर करो। और लोगों ने बोला कि भाई इंडोर में बॉल ऊपर चले आती है, तो जो भी आपको रूल बनाना बनाइए, ऊपर टच करके सीलिंग पे छक्का डिक्लेयर, आगे बढ़ो। नहीं, गेम ऐसी होनी चाहिए कि गेम के अंदर लक या वो जैसे कहते हैं किस्मत या उस टाइप के फैक्टर्स जो है काउंट नहीं होने चाहिए कि भैया लक उस टाइम ये हो गई इसलिए वो जीत गए। दिस इज टू, ये गेम्स होती हैं तो देखने के लिए कि कौन सबसे बेस्ट है, कौन सी टीम बेस्ट है, किस में कैलिबर है। तो उसमें अब जब आप लक लुक और ये सब ला रहे हो, देन इट्स नॉट अ फेयर गेम। गेम हैज टू बी फेयर, सबके लिए इक्वल होनी चाहिए ताकि किसी को ये नहीं हो कि उसको किसी चीज का एडवांटेज हो रहा है भैया, वो फिर गेम नहीं रहती है, वो ठीक गेम नहीं है मेरे हिसाब से। मजा आ गया बिल्कुल। और देखते हैं अब तो वेट हो रही है इंडिया के जीतने की। चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।